Chali, let's start with it. Fine. Let's quickly revise what we did in the last lecture and then we'll proceed further. So let's quickly revise what we did in the last lecture. In the last lecture, first we understood what is a suit and a plaint. Okay, we understood both the terms, what is a suit and a plaint. So I told you what is a plaint. Basically, I told you that plaint is a document of pleading that is filed by the plaintiff in order to obtain relief. Suit is the set of proceedings. So plaint is a pleading, suit is proceedings. Now, these are the proceedings which are initiated after filing the plaint. So those are suit. Suit are proceedings that are initiated after filing the plaint. Fine. Now, uh, all proceedings which are initiated after filing the plaint are known as suit till the judgment. All the proceedings which are filed, which take place after filing of the plaint till the judgment are known as suit. So this was the second thing that we went on to understand. Then we read section 26. Fine, that the plaint has to be in duplicate. Now I told you, see, 26 provides for a substantive aspect. It says that, see, suit shall be instituted by filing a plaint. Now, in what form the plaint has to be filed, how many plaints have to be filed, what is the nature of plaint, that has been provided in order 4. So we went on to discuss order 4. I told you, see, order 4 is prominently divided into, it has 2 rules, and rule 1 has 3 parts. So the first part is that your plaint has to be in duplicate. The second part is it should comply with order 6 and order 7. And if these 2 parts are not fulfilled, then plaint is not duly instituted. Not duly instituted or filed. So these were the things that we went on to understand prominently. I told you that, say, order 4 rule 1 is very important. It provides that plaint has to be in duplicate. It should comply with order 6 and 7. And if it does not comply with, if these 2 things are not fulfilled, then it is not duly instituted. So वो duly instituted नहीं माना जाएगा. ठीक है. These were the few things that we went on to understand. And then we went on to understand the concept of doctrine of relating back. एक concept हमने समझा जिसको बोलते हैं doctrine of relating back. ठीक है. I told you what is, we understood what is the doctrine of relating back. So I told you, see, what happens basically, here a plaint is filed. Okay. And sorry. So we understood doctrine of relating back, wherein I told you that suppose such a thing happens that a plaint is filed before the registry, and registry raises certain objections, and then corrections are made later on. So in that case, what will happen? The corrections will relate back to the filing of the plaint, original date of the plaint. So this is something known as doctrine of relating back. Now I told you how is it relevant. Now then we went on to discuss how is this relevant with respect to how is this period relevant? इसका कारण क्या है? क्यों मतलब relating back का importance क्या है? Then we went on to discuss limitation and relating back. I told you that such a thing can happen. That suppose this is an entire period of limitation, and here the prescribed period is ending, and here the prescribed period is ending. So here a person files a suit. Here the person files a plaint, and then here somewhere the officer raises the objection. Fine. Now that fellow makes a correction here. Okay. Now this correction, I told you that if we say that this correction was, if we consider plaint to be filed on the date of correction, if we consider a plaint to be filed on the date of correction, and if we don't apply doctrine of relating back, then this suit will be barred by limitation. However, if we consider this correction to be made on the date of the plaint, then the doctrine of relating back will be applicable, and in that case the suit will not be barred by limitation, it will be within the limitation period. ठीक है. तो मेन चीज हमने समझी कि करेक्शन, कि जब करेक्शन होगा उस दैट विल बी, अगर करेक्शन होगा दैट विल नॉट बी द डेट ऑफ सूट, रादर द डेट ऑफ सूट विल बी the date when the original plaint was filed. So your date of suit is relating back to the date of plaint. आपका जो date of suit है वो relate back हो रहा है date of plaint. यहाँ तक clear guys? यहाँ तक clear? Yes, sir. Okay. So basically these were the few things that we went on to understand doctrine of relating back.
Now there is one thing which is known as striking off of claim. Striking off of claim. Now देखो, your एक चीज होती है जिसको बोलते हैं हम स्ट्राइकिंग ऑफ ऑफ क्लेम और स्ट्राइकिंग ऑफ ऑफ सब्जेक्ट मैटर. तो स्ट्राइकिंग ऑफ ऑफ सब्जेक्ट मैटर, स्ट्राइकिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है. उस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिंग बैक विल नॉट अप्लाई. Striking off of subject matter is exception to doctrine of relating back. It is exception to doctrine of relating back. Now पहले तो doctrine of relating back एक बार फिर से समझ लो कि क्या बोल रहा है doctrine of relating back. What is it trying to say? What is doctrine of relating back? See, basically now, say here you file a plaint and here the objections are raised and here the correction is made. Fine. So in that case, the correction will, all the corrections that you have made, that will be related back to the date of plaint. मतलब हम मानेंगे कि आपने जब प्लेंट, ओरिजिनल प्लेंट फाइल की थी, उसमें सारे करेक्शंस थे, एंड द डेट ऑफ प्लेंट विल बी द डेट ऑफ सूट. तो अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस ये है कि सपोज पीरियड ऑफ लिमिटेशन ये है, आप प्लेंट यहाँ ये फाइल करते, ठीक है. अब यहाँ पर कभी ऑब्जेक्शन रेज होते हैं, यहाँ पर करेक्शन कर रहे हो, करेक्शन यहाँ पर कर रहे हो. So this correction will relate back to the original filing of plaint and your suit will be within the prescribed period. आपके जो corrections है वो relate back हो जाएंगे original filing of plaint and your suit will be within the prescribed period. And section 3 का जो हमने शाम में पढ़ा था कि the suit won't be barred by limitation. Suit limitation से बाहर नहीं होगा and चीजें ठीक ठाक चलती रहेंगी. अब ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होता है. देयर कैन बी अ सर्कमस्टांस वेयरइन देयर इज स्ट्राइकिंग ऑफ ऑफ क्लेम, स्ट्राइकिंग ऑफ ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जिसको बोलते हैं स्ट्राइकिंग ऑफ ऑफ सब्जेक्ट मैटर. नाउ व्हाट, व्हेन डज इट हैपन एंड हाउ डज इट हैपन? सी, सपोज सच अ थिंग हैपेंस दैट अ पर्सन फाइल्स अ प्लेंट, ठीक है. नाउ एक सेकेंड, स्टोरी बनाते हैं इसको. सपोज दिस इज अ हाउस. फाइन, दिस इज अ लैंड, इंटायर लैंड है, ये पूरा लैंड है. दिस लैंड इज ऑफ 10 acres. The valuation of this 10 acres is 10 lakhs. ठीक है. सो अगर मैं बोलूं वैल्यूएशन 10 एकड़ की 10 लाख है, तो 1 acre इज ऑफ हाउ मेनी रुपीज? 1 लाख. करेक्ट. 10 एकड़ 10 लाख का, 1 एकड़ 1 लाख का. फाइन. नाउ देयर इज दिस फेलो ए. He files a plaint. He files a plaint claiming this 10-acre land. Claiming this 10-acre land. तो वो यहां पर प्लेंट फाइल करते हैं और बोलते हैं कि ये 10 एकड़ लैंड चाहिए, बट ही वैल्यूज दिस लैंड एट 6 lakhs. प्लेंट तो फाइल करते हैं, बट अपनी प्लेंट में ही वैल्यूज दिस लैंड, ही प्रोवाइड्स अ वैल्यूएशन ऑफ दिस लैंड एज 6 lakhs. तो वैल्यूएशन जानबूझ के कम बताते हैं, सो दैट द कोर्ट फीस पर्पसली ही shows a lesser valuation, he undervalues. So here what is A doing? A is basically undervaluing the claim. So he is undervaluing, he is purposely undervaluing so that court fees is saved. जितनी ज्यादा सब्जेक्ट मैटर की वैल्यूएशन, the larger the court fees, larger the subject matter valuation, larger the court fees. So he purposely undervalues this claim. He says that this 10 acres is of 6 lakhs. Fine. Now what happens here? Somewhere an objection is raised by the officer. Officer says that, boss, this 10 acres is not of 6 lakhs, but it is of 10 lakhs. This 10 acres is not of 6 lakhs, but it is of 10 lakhs. So this is the objection. Please change this. Please correct this. Okay, this is what the objection is raised. Now, what does this fellow do? Instead of correcting the claim, he strikes out certain portion of the claim. अब आइडियली इसे क्या करना चाहिए था? इसकी वैल्यूएशन
6 लाख से 10 लाख कर सकता था, ठीक है, ये बोल सकता था कि ये 10 लाख है, मुझसे गलती हो गई, मैंने 6 लाख लिखा, this has to be 10 lakhs. He could have changed this claim, but rather what did he do? He, in order to bring it within that bracket, in order to bring it within that bracket, he struck off certain claim. उसने ये क्या किया, उसने अपना जो प्लेट है वो 6 लाख का ही रखा, बट ही स्ट्रक ऑफ द मेन क्लेम. उसने क्या किया, उसने बोला कि देखो मैं 10 एकड़ नहीं मांग रहा, आई एम नॉट क्लेमिंग 10 एकर्स, rather I am not claiming 10 acres, rather I am claiming only 6 acres. तो यहां पर 6 lakhs का हो जाएगा. So he basically said that say I am not claiming 10 acres, I am only claiming 6 acres. तो इसके लिए आप मुझे 6 lakhs दे दो. Now here relating back will not apply. Here doctrine of relating back will not apply, and there is a reason for this. Because what A has done, A has basically striken off certain claim. उसका मेन क्लेम 10 एकड़ की जमीन पर था, उसमें से कुछ हिस्सा उसने स्ट्राइक ऑफ कर दिया, या स्ट्राइक ऑफ 4 एकर्स, 4 एकड़ उसने छोड़ दिए हैं, मतलब वो क्लेम नहीं कर रहा. सो दिस इज स्ट्राइक ऑफ क्लेम. सो इन दिस केस दैट व्हेन देयर इज अ स्ट्राइक ऑफ क्लेम, योर डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिंग बैक विल नॉट अप्लाई, एंड यू विल से दैट द सूट वाज फाइल्ड ऑन द सेम डे. इसी दिन पर सूट फाइल हुआ था जिस दिन पर करेक्शन हुआ है. So here you will say that the suit was filed not on the date of plaint, rather on the date of correction. So यहाँ पर आप बोलोगे कि जो सूट फाइल हुआ है वो डेट ऑफ करेक्शन पे ही फाइल हुआ है, सूट प्लेंट के डेट पर नहीं फाइल हुआ. ठीक है. अब देखो, ये तो एक तरीका है, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग अ करेक्शन. आप क्या कर रहे हो, आप एक क्लेम जो मेन क्लेम है आपका उसको कम कर रहे हो, जिस तरह आपको कोर्ट फीस कम भरनी पड़े, आप क्लेम स्ट्राइक ऑफ कर रहे हो. There is other way of doing it. Other way of doing it is that, see, suppose आप पहले बार कोर्ट पे गए, you go to court, you file a plaint, the value of the property is 10 acres is for 10 lakhs. This is the original valuation in land records. सारे land records में original valuation है कि 10 एकड़ 10 लाख के हैं. आप प्लेंट में ये 10 एकड़ मांग रहे हो, but you are showing the valuation of this property to be 6 lakhs. ठीक है, आप प्लेंट में तो मांग रहे हो 10 एकड़, पर आप वैल्यूएशन 6 लाख बता रहे हो. सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर अंडर वैल्यूइंग द क्लेम. आप एक क्लेम की जो ओरिजिनल वैल्यूएशन है उससे नीचे कर रहे हो. सो यू आर बेसिकली अंडर वैल्यूइंग द क्लेम, अंडर वैल्यू क्लेम. ठीक है. सो whenever you undervalue a particular claim, the office raises an objection कि बॉस you are undervaluing the claim, you are misguiding the court so that the court fees is saved. आप अंडरवैल्यू कर रहे हो क्लेम को, आप कोर्ट को मिसगाइड कर रहे हो जिस तरह कोर्ट फीस आपकी बचे. तो यहां पर वो ऑब्जेक्शन रेज करेगा, वो बोलेगा बॉस इसको ठीक करो. सो ईदर नाउ दे विल एडवाइज यू टू करेक्ट इट. नाउ यू हैव टू ऑप्शंस. द फर्स्ट इट इज दैट यू कैन क्लेम ओनली 6 एकर्स, तो 6 लाख आपका सही है. और यू कैन, नाउ हियर यू कैन चेंज, यू कैन मेक अ चेंज. अब आपका 10 एकड़ है, आपने यहां पर करेक्शन कर दिया 10 लाख. सो हियर यू हैव करेक्टेड द एंटायर थिंग. फाइन, आपने जो वैल्यूएशन करेक्ट कर दी, दिस इज नोन एज वैल्यूएशन करेक्टेड. सो व्हेन इट इज अ केस ऑफ वैल्यूएशन करेक्टेड, नाउ the real valuation is 10 lakhs only, and you have corrected this valuation here after the objection was raised. If the valuation is corrected, then doctrine of relating back will apply. Then we will say that the plaint was filed on the original date of, you will say that the plaint was filed when you will say this correction will relate back to the filing of the date when the plaint was originally filed. Okay. So this is basically when you are correcting the valuation. But हर केस में आप करेक्ट नहीं कर रहे हो. You are not correcting the valuation in every case. For instance, in this case, this is only when you are correcting the valuation, but in every case you are not correcting the valuation. हर केस में आप valuation correct नहीं कर रहे हो. जैसे इस केस में अगर आप प्लेंट फाइल करते हो, फिर यहां पर आपका ऑब्जेक्शन रेज होता है. अब अगेन प्रॉपर्टी सेम है, 10 एकड़ है, और वो उनकी जो रियल वैल्यू है, दैट इज द रियल वैल्यू ऑफ इट इज 10 lakhs. Here you claim 10 acres, but for 6 lakhs.
Objection is raised by the office. Objection is raised. They are saying that you are undervaluing the claim. आपने undervalue किया है claim को. Now here, instead of correcting it, what did you do? You struck off a particular claim. आपने ये correct नहीं किया. जैसे पिछले में आपने क्या किया था, आपने ये valuation ठीक कर दी थी. Fine. But instead of correcting the valuation, what did you do? जो मेन चीज मांग रहे थे ना, उसको ही आपने हटा दिया कुछ पार्ट. जैसे आपका ये 10 एकड़ है, तो आपने यहां पर क्या कर दिया, आपने 6 एकड़ रख दिया और इसको 6 लाख ही रखा. आपने ना ये क्लेम स्ट्राइक ऑफ कर दिया. ये क्लेम है और ये अमाउंट है. आपने अमाउंट को बढ़ाया नहीं, आपने क्लेम स्ट्राइक ऑफ कर दिया. Whenever you are striking off a claim, basically you are changing the nature of the suit. कभी भी आप क्लेम स्ट्राइक ऑफ कर रहे हो, तो एक तरह से आप क्या कर रहे हो, यू आर चेंजिंग द नेचर ऑफ द सूट. सो व्हेनेवर द नेचर ऑफ द सूट इज चेंज्ड, कभी भी नेचर ऑफ द सूट चेंज होता है, तो रिलेटिंग बैक अप्लाई नहीं होता है. In that case, we will say that that the suit was filed on the date of correction itself. इसी दिन सूट फाइल हुआ था. Suit filed on the date of correction itself. On the date of correction. Now this is in the cases of striking off of claim. Striking off of claim. ठीक है. Yes, Muskan. Sir, what if suit is filed for recovery of some money? Then in that case, what we'll do? Like, how we'll estimate whether the suit is undervalued? ये समझ में आ गया आपको? Yes, sir. This example is clear. छोड़ दो, फिर वो बाद में दिखेंगे जब आएगा. ठीक है. Yes, Jatin. Okay. So what is written before striking off of claim? Striking off of claim ना, ये claim है. ये तो striking off of claim, ये तो claim Okay, है. This is claim. हाँ. Fine. So basically this is what is known as undervaluation of claim. ठीक है. How striking of claim changes the nature of the suit. Striking of claim changes the nature of the suit because the main thing that is claimed, that is reduced. So the moment that is reduced, the nature of the suit is changed. जो main चीज आप मांग रहे थे, वो आपने कम कर दी, तो automatically nature of the suit is reduced, changed. So that is the reason in that case, your doctrine of relating back will not apply. So here, doctrine of relating back will not apply. Clear? Not applicable. Is this clear, guys? आगे बढ़ें. ये लिखोगे? Yes. ठीक है. In certain cases, ठीक है. If it is a case of undervaluation, if it is a case of undervaluation, ठीक है, and the court has required the plaintiff to make correction. The plaintiff to make correction. To make correction to the valuation. To make correction to the valuation. But the plaintiff instead of making the correction, has struck out a part of the relief. Has struck out the part of the relief or property.
or the property, ठीक है, so as to bring the property within original valuation, within original valuation, then the suit will be said to have been filed on the original date. Then the suit will be said to have been filed not on the original date, rather on the date when the correction is made, rather on the date when correction was made, जब correction किया गया था तब, ठीक है, rather on the date when the correction was made, ठीक है. Now if in the same case, यहाँ तक क्लियर है, ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. मुस्कान, आपका आंसर मिल गया, उसमें क्या होगा अभी तक मनी क्लेम में? नहीं मिला इसमें. No, sir. सपोज रिकवरी ऑफ मनी है और इंटरेस्ट है, उसने मनी इंटरेस्ट के ऊपर उसने कोर्ट फीस नहीं वैल्यू नहीं किया, कोर्ट फीस नहीं पे की, ऑब्जेक्शन इज रेज्ड, then he decides to strike out the interest. So in that case you will say that the suit is filed on the same date, not on the relating back will not occur. Okay, got it, sir. Now it's clear. Thank you, sir. You have changing the nature ना in any sense. चलिए आगे बढ़े, ये यहाँ तक क्लियर है ना? आगे बढ़ो. अब in the same case if he had changed the valuation, valuation of the suit without altering the suit property, then it would relate back to the original date. Fine. अब देखो, ठीक है, तो basically if this thing happens that an objection is raised regarding his valuation, that the claim is undervalued, he corrects that and he values it correctly, then relating back will apply. But if he makes the change in subject matter itself, if he strikes off the claim for subject matter itself, अब 10 एकड़ मांगने के जगह उसने 6 एकड़ मांग ली, तो in that case you will say that the suit is filed on the date of correction, not on the date when the plaint is filed, and relating back will not apply. अब clear है? Now it's clear, guys. आगे बढ़ा जाए? Yes, sir. ठीक है, एक सेकेंड. किसी को डाउट तो नहीं है ना? आगे should we proceed? Okay. Yes, sir. Okay, works. No doubt, sir. Please proceed. Okay, makes sense. Sir, last slide, please. Sir, I have a doubt. As you mentioned, the people devalue their property. So, what advantage do they? As you mentioned that कि उनको फायदा मिलता है कि उनको कोर्ट फीस कम भरना पड़ता है. But जैसे आपने बोला कि उसका क्लेम 10 अंडर वैल्यू करते हैं ना, अंडर वैल्यू में you'll have to pay less court fees when there is under valuation. वो समझो, लेकिन जैसे आपने बोला कि
जैसे आपने बोला कि वो 10 एकड़ की जगह 6 एकड़ ही क्लेम करते हैं, स्ट्राइकिंग ऑफ तो ऑफ फिर वो 4 एकड़। स्ट्राइकिंग ऑफ क्लेम में देयर इज नो प्रॉफिट एज सच। वो आप स्ट्राइकिंग ऑफ इसलिए कर रहे हो बिकॉज यू डोंट वांट टू गेट इनटू ट्रबल। आप कोशिश ये कर रहे हो कि जल्दी से जल्दी सूट डिसाइड हो जाए, टाइम ना जाए ऑब्जेक्शंस में। और व्हेन यू आर नॉट एबल टू करेक्ट द ऑब्जेक्शंस, कोर्ट फीस इज अ लॉट, यू डोंट हैव मनी, तो आप स्ट्राइक ऑफ कर दोगे, आप बोलोगे ये तो सूट चलता रहा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, अब आ जाइए। ठीक है, तो बेसिकली अब ये था आपका रिलेटिंग बैक। सो डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिंग बैक इज बेसिकली व्हेन यू आर मेकिंग एनी करेक्शन, दैट करेक्शन विल रिलेट बैक टू द ओरिजिनल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द प्लेंट। वो करेक्शन ओरिजिनल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द प्लेंट पे रिलेट बैक करेगा। दिस इज व्हाट द डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिंग बैक सेज। वन एक्सेप्शन इज व्हेन अ क्लेम इज स्ट्रक ऑफ। स्ट्रक ऑफ क्लेम क्या होता है कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो पहले पूरा क्लेम हुआ था, करेक्शन के बाद आपने सब्जेक्ट मैटर को क्लेम आधा कर दिया। जैसे इस केस में 10 एकड़ की पहले जमीन क्लेम की थी, जब करेक्शन किया आपने 10 एकड़ से आपने सिर्फ 6 एकड़ ही क्लेम की। सो यू हैव बेसिकली स्ट्रक ऑफ द क्लेम। So whenever there is a strike off, relating back will not apply. Rather, it will remain. Rather the suit will be said to be instituted on the date of correction itself. जो सूट है ना उसको हम मानेंगे कि डेट ऑफ करेक्शन पे इंस्टीट्यूट हुआ है। नाउ देयर इज अ रीजन फॉर दिस। रीजन ये है, कारण ये है उसका कि आप रीजन ये है कि बिकॉज द नेचर ऑफ द सूट हैज चेंज्ड, सो रिलेट बैक करना सेंस नहीं बनता उस केस में। ठीक है, नाउ दिस वाज देयर डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिंग बैक। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट दे डू आस्क, does a judge has the power directly to take the plaint? See, ideally you have to file a plaint before the proper officer. Plaint has to be filed in duplicate before the proper officer. Now the question is whether the judge has the power to take the plaint. आपको क्या लगता है? कमेंट्स में लिखिए, उसमें चैट में लिखिए। What do you guys think? Whether the judge has the power to take the plaint? Whether judge has the power to take plaint? No, 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 no. In PIL matters, I think yes, yes, I think under inherent power. Yes, sir. See, judge has the power to take plaint. It is not a denial. In fact, the proper officer which they are talking about is an agent of the judge. Judge is the person who is deciding the case ना ultimately. तो जो proper officer है वो भी judge का agent ही है। But इसमें एक सिनेरियो है, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जज विल नॉट टेक, will not directly, you cannot just go to court and directly file a plaint with the judge will not take such a plaint because it can it can result into biasness. It can bring an apprehension of biasness. लग सकता है कि यार ये तो जज biased है इस बंदे की, for this particular plaintiff he took directly, he directly took the plaint. So in that case the judge will not directly take the plaint, but he will take through a proper channelized manner, which is first you'll have to go to the proper officer, you'll have to go to the registry, and then the plaint will come to judge. तो वैसे तो है power, nowhere in the code it has been it has been prohibited. He has the power. In fact, the proper officer is the agent of the judge, but ideally he will not take. And the reason he will not take, because it may result into apprehension of biasness. एक बायसनेस क्रिएट कर देगा कि भाई ये क्या कर रहा है जज, ये डायरेक्टली प्लेंट ले रहा है। तो दैट इज द रीजन जज विल नॉट डायरेक्टली टेक, एंड इट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द चैनलाइज्ड मैकेनिज्म दैट हैज बीन प्रोवाइडेड इन द प्रोसीजर। तो आपको प्रॉपर ऑफिसर के थ्रू ही जाना पड़ेगा। सो अ जज हैज द पावर टू टेक प्लेंट, अ जज हैज अ पावर टू टेक प्लेंट, पावर टू टेक द प्लेंट, take the plaint, to take the plaint, but he would not choose to, but he would not do so, as it may bring, as it can bring apprehension of biasness, as it can bring apprehension of biasness, as it can bring the apprehension of biasness. ठीक है, the power has been channelized
the power has to be channelized by other effective mechanism. ये इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है. अगर आपसे इंटरव्यू में पूछें कि क्या जज के पास पावर है प्लेंट लेने की, द आंसर इज यस. इनके पास है पावर बट यूज नहीं करेंगे. द रीजन दे वोंट यूज द पावर बिकॉज इट कैन रिजल्ट इनटू एप्रीहेंशन ऑफ बायसनेस. एक बायसनेस क्रिएट कर सकता है, तो यूज नहीं करेंगे ये पावर. ही विल जस्ट अवॉइड इट. ठीक है, ही विल आस्क द पर्सन टू गो थ्रू द प्रॉपर मैकेनिज्म. यस मुस्कान. Sir, what are the other effective mechanisms? Other effective mechanism is the normal mechanism that has been provided, no? Oh, okay, sir. Thank you. ठीक है, फाइन. अब आ जाओ वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग. Come to verification of pleading. Now, what does verification of pleading? What does verification of pleading is? From which section the power is derived? Section 26 and order 4 rule 1 sub rule 1, because the proper officer here is the agent of the judge. So judge himself has the power. He ultimately is the deciding authority ना. तो जो proper officer है वो उसका agent ही हुआ. अब आ जाओ verification of pleading पे. ठीक है. Come to verification of pleading. Now your verification of pleading is provided in order 6 rule 15. आ जाइए order 6 rule 15 पे. Are you guys in order 6 rule 15? Yes. ठीक है. So it talks about verification of pleading. So it says that save as otherwise provided by any law for the time being in force, every pleading shall be verified at the foot by the party or by one of the party pleading. So अब verification at the foot मतलब क्या होगा? यहाँ suppose ये plaint है. This is the entire plaint. And here is court name, title, वगैरह वगैरह. And here the pleading start. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And here there is a relief and cost clauses. And then when the plaint ends, जब plaint खत्म होती है ना end पे, तो यहाँ पर foot पे at the end there will be a verification clause. And this is mandatory. So they are saying that save as otherwise provided, every pleading shall be verified at the foot by the party or one of the party or by one of the parties pleading, or by some other person proved to the satisfaction of the court acquainted with facts. So by whom it has to be verified? It has to be verified by the party. मतलब party मतलब इस केस में plaintiff verify sign करेगा कि ये verify किया है मैंने. So basically what exactly he has to verify, वो sub rule 2 में बताया है. The person verifying shall specify reference to numbered paragraph of the pleading, what he verifies with his own knowledge and what he verifies upon received and believed to be true. Basically ये बोल रहे हैं कि जितना भी मैंने pleadings यहाँ लिखी हैं, जितने भी paragraphs लिखे हैं, they are true to my own knowledge, and I believe them to be true. Basically, you are verifying that these paragraphs that you have mentioned in the plaint are either true or you believe it to be true on the basis of some information that the person has received. So यहाँ पर आप verify कर रहे हो कि जितनी भी मैंने pleadings की हैं यहाँ पर plaint में, जितने भी मैंने contentions की हैं वो या तो सच हैं मेरी knowledge के बगैर, या तो मुझे कहीं और से knowledge आई है and उस basis पे they are true. So these are the two things. Basically, you are verifying that the information that I am providing is correct. ठीक है. And in the end, you are signing it here. आप यहाँ पर एक sign कर रहे हो. ठीक है. अब आ जाओ sub rule 4 पे, and sub rule 4 is the most important one. Come to sub rule 4. Are you guys on sub rule 4?
the person verifying the pleading shall also furnish an affidavit in support of pleading. इसको बोलते हैं affidavit in support of pleading. In support of pleading. जो भी शख्स वेरीफाई कर रहा है उसे एक एफिडेविट भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा अपनी प्लीडिंग के सपोर्ट में. अब दिस इज सिमिलर टू योर सेक्शन 26(2). 26(2) में भी तो यही बोला है कि सारे फैक्ट्स आप प्रूफ करोगे, एफिडेविट से प्रूफ करोगे. एफिडेविट, यू विल हैव टू प्रोड्यूस एन एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ प्लीड. सो हियर दे आर सेइंग दैट एफिडेविट इज रिक्वायर्ड इन सपोर्ट ऑफ प्लीडिंग. ठीक है. Now basically these are the four things. Now first we have to understand that what this section is applicable to pleading. It is not only applicable to plaint. Pleading is a broad term. जो pleading है ना, ये section pleading के लिए apply करता है. This is not only applicable to plaint. Now pleading is a broad term. Pleading में आपका plaint आ जाते हैं, प्लीडिंग में आपकी WS आ जाते हैं, प्लीडिंग में आपके काउंटर क्लेम आ जाते हैं. ठीक है. इन प्लीडिंग में योर सेट ऑफ ऑल्सो फॉल्स अंडर. इन प्लीडिंग योर रेप्लिकेशन ऑल्सो फॉल्स अंडर. इन प्लीडिंग योर रिजॉइंडर ऑल्सो फॉल्स अंडर. इन प्लीडिंग योर एडिशनल WS ऑल्सो फॉल्स अंडर. एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट, दिस ऑल्सो फॉल्स अंडर. ठीक है. And other pleadings. Pleadings is any document wherein you are claiming a plea. कोई भी डॉक्यूमेंट जिस पे आप एक अर्जी मांग रहे हैं वो प्लीडिंग हो गया. तो वो तो प्लेंट भी हो सकता है. दैट कैन बी WS, दैट कैन बी काउंटर क्लेम, दैट कैन बी सेट ऑफ, दैट कैन बी रेप्लिकेशन, दैट कैन बी रिजॉइंडर, दैट कैन बी एडिशनल WS. तो ये जो ऑर्डर 6 रूल 15 है, दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल प्लीडिंग. वो बोल रहा है सारी प्लीडिंग्स वेरीफाइड होनी चाहिए. नाउ दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू प्लेंट, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल प्लीडिंग्स. सो दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू प्लेंट, नॉट ओनली एप्लीकेबल टू प्लेंट, बट ऑल प्लीडिंग्स, फाइन. अब देखो वेरिफिकेशन में आप क्या कर रहे हो and why this is necessary. See, in verification basically you are confirming that whatever I have stated in my pleadings, जो भी मैंने अर्जियां की हैं वो सही है मेरे हिसाब से, and or the information that I have received वो मुझे लग रहा है कि ठीक है और उस हिसाब से मैंने ये pleadings सारी की हैं. So basically you are confirming that the information that I have stated is true. जो मैंने ऊपर state किया है that is true. ये आप ये confirm कर रहे हो. Fine. Now what will happen if your plaint does not have verification? यहाँ वेरिफिकेशन नहीं है, यहाँ आपने वेरिफिकेशन साइन नहीं की है. If the plaint does not have verification, then what will happen? Will the plaint be invalid, or the proceedings will not start? What will happen? Or the plaint be rejected? The answer to this question is that the plaint will not be rejected. Not writing verification clause in the plaint, not signing verification clause in the plaint is a curable irregularity. Curable irregularity मतलब इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे आपका plaint reject नहीं होगा. It won't hamper anything, but you will have to make the correction whenever it is pointed out to you. So this correction will relate back to the date of filing of the plaint. तो सपोज यहां पर आपने एक प्लेंट फाइल किया, उसमें वेरिफिकेशन वाज एब्सेंट, वेरिफिकेशन क्लॉज ही नहीं डाला आपने. ठीक है. सो हियर योर ऑफिसर और रजिस्ट्री विल पॉइंट दिस आउट, ही विल रेज दिस ऑब्जेक्शन, इसको बोलेंगे ऑफिस ऑब्जेक्शंस, एंड देन हियर यू विल हैव टू करेक्ट इट, एंड द मोमेंट यू करेक्ट इट, दिस करेक्शन विल रिलेट बैक टू द प्लेंट. But this, just because the verification is absent, that will not be a ground for rejection of plaint. क्योंकि verification नहीं है एक plaint में, वो rejection नहीं रहेगा, because it's a mere formality, it's a sort of a formality
and it is a curable irregularity. इससे कुछ ऐसा बड़ा नहीं हो रहा, curable irregularity और ठीक हो सकती है. Now this was held in, यहाँ तक clear हो? Yes, sir. Yes. Now ये जो चीज है आपकी verification is a curable irregularity, this was held in बिकाजी केशवजी जोशी, बिकाजी केशव जोशी वर्सेस बिरजलाल नंदलाल, वर्सेस बिरजलाल नंदलाल, सुप्रीम कोर्ट 1955, 1955 सुप्रीम कोर्ट. ना इस केस में बोला कि mere non signing of the verification clause in itself will not result into rejection of pleading. सिर्फ वेरिफिकेशन क्लॉज साइन नहीं है, वेरिफिकेशन क्लॉज लिखा नहीं है, उस ग्राउंड पे आपका प्लेंट रिजेक्ट नहीं होगा. कोर्ट अलाउ करेगी पार्टीज को करेक्शन करने के लिए, और जो करेक्शन होगा कोर्ट विल अलाउ द पार्टीज टू मेक द करेक्शन एंड दैट करेक्शन विल रिलेट बैक टू द ओरिजिनल फाइलिंग ऑफ द ओरिजिनल डेट ऑफ फाइलिंग. तो लिखिए that mere non-writing or non-signing of the plate, of the verification in itself, will not result into a rejection of the pleading, rather the court may allow the party to make necessary correction and such correction will relate back to the day of filing the original pleading, original pleading. Such a defect is considered irregular. Such a defect is considered irregular. Sorry, such a defect is considered curable irregularity. Irregular क्या बोल रहा हूँ मैं? Such a defect is considered curable irregularity. Sorry. Curable irregularity. ये clear है? Is this clear? Yes, Kumar. But if the same facts are stated in affidavit and the person can be held criminally liable if we Yeah, They- आ रहा हूँ affidavit पर. also, Affidavit. so what is the use of verification clause then? हाँ वही आ रहा हूँ. What is the use of verification if the same thing is in affidavit? That is what I am coming at. ठीक है. Fine. Is the position same for commercial dispute? I don't think so. Position उसमें अलग है commercial dispute में. There is a different 15A है उसमें. उसमें strike out करेंगे कोर्ट. आपका नीचे है clause 5 है उसमें. But that we'll consider when we do commercial dispute. उसमें 5 आई है. उसमें एक strike out of a pleading. The court strikes out the pleading in that case. The position is different in commercial. ठीक है? Should we proceed? उसके नीचे ये 15A आप देखोगे तो कमर्शियल है, बट अभी उसमें मत जाओ, डोंट गेट इनटू. ठीक है. Now the question that normally arises is that what is the use of affidavit when we already have verification, or what is the use of verification when we already have
affidavit. See, the purpose of two things is very different. Now, firstly, what allows affidavit? What things permit affidavit? What things have made affidavits? What things make affidavit important? What things have made affidavit mandatory? So one is section 26(2). It clearly says that every plaintiff will have to have an affidavit. Then comes order 6, rule 15, sub rule 4. ठीक है, ये दोनों चीजों ने आपने, ये दोनों भी चीजों हैं, जो भी दोनों भी चीजें हैं, both the things have both these things have made affidavit very important. ठीक है, and incidentally and surprisingly both the things were added in affidavit. E नहीं है, affidavit, sorry. Both the things have made affidavit mandatory, and interestingly both these sections were added in 1999 amendment. 1999 amendment में आ गए थे. Now, what is the purpose of affidavit? Why do we need affidavit at all when we have verification? Verification is doing the same job. Verification is telling us that this is true. Even in verification, the plaintiff is basically verifying that these statements are true. What is the need of affidavit at all? See, the purpose of affidavit is that what is the need of affidavit when we already have verification? एफिडेविट की क्या जरूरत है जब हमारे पास ऑलरेडी वेरिफिकेशन है? सी, एफिडेविट की ये जरूरत है कि एफिडेविट मेक्स अ पर्सन क्रिमिनली लायबल, व्हिच वेरिफिकेशन डज नॉट डू. वेरिफिकेशन इज नॉट ऑन ओथ, एफिडेविट इज समथिंग व्हिच इज ऑन ओथ. ठीक है, ओथ में हो रहा है. सो एनी स्टेटमेंट व्हिच इज फॉल्स, so the person can be held liable for perjury and in perjury. So affidavit fastens a criminal liability on a person who is filing the affidavit. जो affidavit है वो एक criminal liability fasten कर देता है, because affidavit is on oath and your verification is not on oath. So affidavit basically fastens an additional liability in such a case. ठीक है? So this question, that why do we need affidavit at all? Is affidavit a mere formality? Was laid down in Salim's advocate, was raised in Salim's advocate. Salim's advocates में ये question raise किया गया था कि is affidavit a mere formality? Why do we need affidavit at all? 26(2) में दिया गया है, order 6 rule 15 sub rule 4 में दिया गया है. Is it a mere formality? The court said that no, it is not a mere formality. It fastens a criminal liability. It is made on oath. That is the reason in every case it has to be there. So this was in Salim's Advocates Bar Association. Bar Association, Tamil Nadu. Tamil Nadu, Union of India, which is 2005 Supreme Court. This is a 3 judges bench. And here, this bench was presided by Y.K. Sabrawal, Justice Y.K. Sabrawal. Sabrawal. Okay, Justice Y.K. Sabrawal. So in this case, the question that was raised was versus Union of India. Versus Union of India. Okay. In this case, the question raised was what is the use, what is the requirement of affidavit, what is the use of affidavit when already verification is required to be filed. तो उसका क्या जरूरत है जब आप already verification file कर रहे हो. So the court held that verification is not on oath. Firstly, the court held that verification is not on oath. That verification
is not on oath, not on oath, while affidavit is on oath, while affidavit is on oath, आपका affidavit oath पर है. By requiring to file affidavit, एक सेकंड यहाँ पर, by requiring to file an affidavit, by requiring to file an affidavit, an additional responsibility is added. An additional responsibility is put upon the party. Not to make false pleading, is put upon the party not to make false pleading, and avoid frivolous pleadings, ठीक है. एफिडेविट द्वारा एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डाल रहे हो पार्टी के ऊपर कि उसे फॉल्स प्लीडिंग नहीं करनी और उसे अवॉइड करना है फ्रिवलेस प्लीडिंग. ठीक है. एंड एन एलिमेंट ऑफ फियर, आगे बढ़ू. Yes, sir. ठीक. An element of fear is created. एक डर क्रिएट कर रहे हो. As the party knows that if he makes a false pleading, he will be held liable for perjury. He may be held liable for perjury. Under section 193 of IPC. ठीक है. अब दूसरा सवाल होता है कि whether this affidavit that the party is giving here, कि बोल रही है कि जो भी मैंने बोला है वो सच है, and it's true to my knowledge, and this is being given in form of affidavit, whether this affidavit is a piece of evidence. The court held that such an affidavit in itself here cannot be said to be a piece of evidence, and the parties will have to prove all the aspects that it is claiming in trial by evidence. So it was held that affidavit in itself cannot be used as piece of evidence, and the party will have to prove its facts by evidence. ठीक है. चलिए, ये हो गया आपका this Salim's advocate with respect to affidavit. So affidavit, the reason affidavit is important because it fastens a criminal liability, and the purpose is to avoid frivolous and false pleading. So if a person makes such a pleading, he will be held liable for perjury. तो इसके लिए आपने बोला है कि affidavit भी mandatory है. ठीक है. Sir, can you explain the last point? Is an affidavit.
affidavit in itself cannot be used as a piece of evidence. That I'm saying that affidavit cannot be used as a piece of evidence. Affidavit अपने आप में एविडेंस की तरह नहीं एक्ट करेगा, आपको सारे फैक्ट्स वापस प्रूफ करने पड़ेंगे. आप सपोज ये कर रहे हो, आपने ये प्लेंट बनाया, आपने सारे प्लीडिंग्स बनाए, आपने एक एफिडेविट लगा लिया साथ में कि ये जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है, तो अब दिस इटसेल्फ इज नॉट द एविडेंस. यू विल हैव टू प्रूव ऑल दीज फैक्ट्स बाय अदर एविडेंस. ठीक, अब क्लियर? सर इट्स पर्जरी बाबा, पर्जरी है. ठीक है. वेट सर, एफिडेविट इज टेकन ऑन ओथ, तभी भी व्हाई इजंट इट्स यूज एन एविडेंस? because of two things. Firstly, it is self serving. जो बंदा बोल रहा है उसके फेवर में ही है. तो अब सपोज इसने एफिडेविट दे दिया, बोल रहा मैंने जो भी प्लेंट में कहा है वो सच है, तो आप एफिडेविट एविडेंस में लेके करोगे भी क्या? क्या पर्पस सर्व करोगे? अब चाहोगे ना वो प्रूव हो सारी चीजें. ठीक है. दूसरा है कि कैन प्लेंटिफ बी हेल्ड लायबल ऑन द बेसिस ऑफ? नो, वेरिफिकेशन क्लॉज के बेसिस पे लायबिलिटी फास्टन नहीं होती. That is the reason they have added. But you can impose cost on the basis of verification clause for sure. No criminal liability. Is affidavit then accompanied by exhibits for proving them? See, exhibits की अलग बात हो गई, exhibits की आप अलग बात हो गई. Is then affidavit अलग? अगर plaintiff evidence दे रहा है तो that is a different issue altogether. आपकी लग रहा है ट्रेन छूट रही है, दैट इज डिफरेंट इशू. वो प्लेंटिफ एविडेंस हो गया, ये एविडेंस स्टेज नहीं है. यहाँ पर आप प्लेंट फाइल कर रहे हो, यू आर फाइलिंग द प्लेंट हियर. So when you are filing a plaint, along with it you are filing affidavit that whatever I have stated in plaint you are making it correct. अब आप plaint के साथ जो भी exhibits लगा रहे हो, so you can obviously add affidavit also of the witnesses that you have said. तो वो affidavit is different. वो order 18 rule 4 में वो different है, आपका. ठीक है, चलिए, we'll end it here. Any doubts? अब आप पूछिए. Now you guys can ask. Sir, please, types of pleadings. Yes, Mohit. Sir, I understand the purpose of filing an affidavit to fasten the criminal liability. Sir, then why not replace the verification of with pleading affidavit? with? Yes. One way of looking at as it that affidavit acts in its own domain. You cannot just replace it with verification clause, because verification clause has its own importance. Ideally तो ऐसा करना चाहिए, we write the same thing in both of them, but it has its own domain and वो चलता आ रहा है. Is something that they don't want to intend to disturb, so that is the reason. So sir, there is no any separate purpose of verification. Verification clause was ideally made to ensure that the person who is actually making the pleading, he is verifying that every statement he is making is correct. But the problem is that there was no criminal liability. So there is liability, मतलब on the basis of verification you can impose cost कि verification गलत लिखा है आपने, ये किया है, but एक criminal liability impose नहीं कर सकते. तो एकदम ऐसा नहीं बोल सकते कि it is completely useless. It has some use and it is considered mandatory. But हाँ, आप बोल सकते हो कि after affidavit coming into picture after 1999, उसका importance कम हो गया, ये आप बोल सकते हो. This you can say. Okay, sir. Thank you. ठीक है. ये लो सलीम्स एडवोकेट, जिसको देखना था. Any more doubts? Sir, can you explain that this suit cannot be barred by limitation once again? Yep. एक second. ये तो हो गया ना? Yep.
cost can be imposed on the basis of 35A and 35B cost. Which one you wanted to see? Judge's power. Judge's power. एक सेकेंड. ठीक है. This one, na? Sir, can you explain the suit cannot be barred by limitation? Which part, Divya? Which part, Divya? कौन सा part आप बोल रहे हो? That concept, sir. Where? Which part? This one? This? Relating back will not apply. Yeah, suit cannot be barred by limitation. In which relating back will not apply. यहाँ पर relating back नहीं लगेगा. ये वाला ना? ये वाला आप बोल रहे हो. तो इसमें तो सिंपल है. इसमें सपोज देखो, ये 10 एकड़ की जमीन है. ये मांग रहे हैं 10 लाख, मतलब सॉरी 10 एकड़ की जमीन है और ये 10 लाख रुपए में है. ठीक है. तो आप प्लेंट फाइल करते हो, आप कोर्ट को बताते हो कि इसकी वैल्यूएशन 6 लाख. कोर्ट ऑब्जेक्शन रेज करता है कि आपने अंडर वैल्यू किया है जमीन को. एक्चुअली तो वैल्यू 10 लाख है, आप 6 लाख क्यों बता रहे हो? तो आप करेक्ट करने के जगह आप क्या करते हो कि वैल्यूएशन जो 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 सब्जेक्ट मैटर है उसको स्ट्राइक ऑफ कर देते हो. आप ये जो मेन सब्जेक्ट मैटर है, ये एसएम, इसको स्ट्राइक ऑफ कर देते हो. इसको यहाँ पर जो 10 एकड़ है उसको 6 एकड़ कर देते हो और यहाँ पर 6 लाख ही रख देते हो. सो नाउ दिस इज समथिंग नोन एज स्ट्राइकिंग ऑफ क्लेम. तो यहाँ पर relating back will not be applicable. The suit will be filed on the date of correction only. Okay. Sir, if correction for striking off is done after prescribed period, then what will happen? Suit will be barred. Barred by limitation. Barred by limitation. ये आज मैं शाम को ही कराने वाला हूँ, by the way. ये मैं उधर ही डिस्कस करूंगा कि it will be barred by limitation. This I'll have to ये शाम को मैं रिपीट करूंगा by the way for you guys also. क्योंकि ये लिमिटेशन में भी मुझे पढ़ाना है. Relating back. If the striking off is filed after expiry period, strike off of claim happens after expiry period, then after expiry of prescribed period, then the suit will be barred by limitation. कुछ नहीं बचेगा उसमें. Clear दिव्या? अब clear है? Should we proceed? चलिए. See you in the evening. Bye guys. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.